Hi guys, what's up? How's everyone doing? I'm back. That's good. Is everything working? Are we live? I want the chat. Okay. Yeah, I think the chat is working. Stream is excellent. Yeah, seems good. Yeah. So, so we are back at the no GPT coding, guys. We don't use ChatGPT. Uh, so what I realized was the more I was using like ChatGPT, and like it was very at my very start of my career, right? Like I graduated in 2022, and all of this started coming in 2022. So like this vibe coding has killed my coding skills. So these streams are to get back at coding personally and not let the AI overlords control us, which is like the overall goal also of my channel is to keep us uh, well in control and not let the AI take over. So all that is good. How do we start? So we in the last stream we started coding the snake game, right? That was on Twitch. I uploaded that stream here. Um, so the basic idea is now that I'll just show you guys. One second. So the basic idea here is that now that I'm on Linux, um, and also I'll be working on that self-driving car streams, right? Which will come after I complete this one. So if you look at Carla, um, this one. So yeah, this thing. So if you look at Carla, all of their APIs, etc., are written in pygame, like using pygame, and all the codes which display something, um, like the self-driving, which I showed last time, is also written in pygame. So that's why I think I have to understand how pygame works in the background before we get to this. So I was just trying to create a snake game inside this. So if you look at this, so here we go. Um, and so this was the last try we had, snake 3. Yeah, so and we could control this using the keyboard. And whenever the boxes or the rect objects of the pylon were touching, it was moving. It was respawning at a new location. So this was the last, update. And what we were trying to do next is to so let me just check. So the main goal here will be to start extending the size of the snake, right? So for that, last time we couldn't do that properly. And uh, one sec, let me just check if the audio is fine. Check if the audio is fine. That we should start extending the size of the snake, right? So for that, last time we couldn't do that properly. And yeah, one sec. Seeing good? Yeah.
All good. So, um, yeah. Okay. So let's just clear this. And yeah. So we are going to change this code today. Um, Today is 15 November, right? Let me create this 11:25, and what what we're going to do is get the snake tail working, snake size working, and second goal is to get the core working. So these are the goals. Let me save this. Put this size. Yeah. So this code basically what it's doing was like the last time. It was creating the snake object, right? A snake class, sorry. And for that class, that object, it was taking like the rect object, body parts. So what I was trying, like this was our last try, right? Using the body parts, I think. This one has also, yeah. So this was like the failed attempt, right? Uh, so let's first create a new file, snake 4.1, 4.1 dot file 4 underscore 1. Can we give points to everything, this thing? Yeah. So let's first copy all of this as a failed try. Now what we need to do is, all of this is fine, this is fine, this is fine. Yeah. So this is the body parts thing, right? So what I realized was if we keep like let's say the body parts inside the snake object itself, it is going to be complicated. So the idea which I got was why not create uh, like a snake body part as a different class and the entire snake as a different class. So that every snake class will have like a body parts as a context, as a tuple inside it or a list inside it. And what we can do is call certain functions over that list to get it like to get the function working. So what I was saying was, so let's say um, how do we do this? Yeah. So this has move in it, right? So this specifically will be our body, like snake body. Um, let's name this snake only, and let's name the bigger thing as or let's name the snake body part. Body, snake part and snake body. Let's do that. Snake, snake part, and we call it somewhere, right? So this will be snake part, right? And yeah, this looks good. And we have to create a class which will be full snake, right? And should this, I don't think this will need anything like sprite class, sprite it in entrance, and def, let me init it, and we need self dot. Yeah, so what all will be required in that snake class? So firstly, we will require a list of um,
We need to maintain a list of body parts, right? Yeah. So body parts equals to, let's say, a list, and self dot body parts equals to body parts. And this list will basically contain all the snake objects inside it, right? So I don't know how they do it in like real time, but this seems kind of cool to me. And so, by the way, I'm drinking buttermilk. This is good for health. Never eat and code, guys. Never eat and code. It should be eat, sleep, code, repeat, not sleep, eat, code, repeat. PG jokes. Anyways, so self dot body parts, and let's try this for now. So let me let me 1 sec. So we want to for now all this is good. Snake, put snake, spawn. That is fine. This is fine. Yeah, let me just comment this for now. Running is true. Apple snake one, snake part. Right? Let's do snake two. So this is again snake part, and let's change the names, guys. So this will be head, and this will be neck, and let me print. Yeah, this looks good. Oh, yeah. So snakes are working. That's fine. So today we are not gonna stop until we complete this, whatever required, and I'm not going to use ChatGPT. So nor I'm going to look at any how like snake uh, games are coded in pygame. So this looks good. Now what we want to do is create a snake part one, part two. Let's name this part. So snake one will be basically full snake, and it will take in a list of snake part one and snake part two. And if I now, let's say if I here, I print, let's see what I get. So
So let's bring that here down here after here. And let's create a wrapper object. So what wrapper module function does is it prints something. So what I can do is print. Uh, what is the syntax of wrapper? One sec. We are going to use that. So what wrapper does is you return it as a string. Okay. So I just return it and it prints. So f string. This is a full snake with body part and body parts. Yeah. And if I do that, so look, now this is working. One sec, I'll just show you. So if you look at the output here in the terminal, what it's saying is we got a full snake with body parts as these two, right? And let's not put body parts. Uh, so for I in for K for body for parts in self dot body parts, I want to uh, inner j equals to list. I want to j dot append, and I want to do parts dot names, right? So does this have name? So snake part dot name, I think, right? Yeah, dot name. So I want to do body part dot name, and here I want to print j. That's it. So yeah, head and neck. So this is working properly. Uh, this idea. Now with this in mind, to proceed, um, so now that we have a big class of full snake, right? What we want to do is here. Let's remove this. Let's comment this out for now, and we want to maintain. Yeah. So now that we do this, so full snake maintains the uh, body parts, and I think the of the snake, control of the snake, which is basically the move commands and the direction change, I think should be in the full snake. And in the snake part of it,
Uh, we only have in the snake part the the all the mechanics of the single snake um, object which is working. So what essentially I'm trying to do is online paint. I'll show you. Or we have the Microsoft Note. Is it opening here? So guys, I'll just get the one not working here so that you know. So did this work? Uh, yeah. So one sec. Let me get back. So let's ignore this part. Let's go into draw. Let's get a pen. Increase its size. Yeah. So let's zoom in. Yeah. I can just zoom out. It is beautiful. So you can see the screen, right? Yeah. So here, what the idea is, so for a snake, right? Snake. So currently, our snake just looks like this, with some kind of direction and some kind of velocity, right? So if you look at, it has location and velocity. Sorry. So this is not direction. This is location, and velocity just has like two numbers, which is basically the x velocity, xv, and yv. And this is just two numbers, which is x1, x, and y. So the key idea here is that this blob or this body part keeps moving, and this xv, yv are basically the increment it should move in the location per game loop, which is basically per instant of time. That's why xv, being a distance unit, is like a velocity also. So that is fine. But now what we are going to try to do is, um, let's say I eat an apple. Now that I have two body parts, right? Body part one and body part two. So this one, it has like its children, right? Either what you can do is in the memory of this one, you can have this one as a child, and you could have a relation between the parent and the child, so that let's say um, velocity of this one has to be same to this one if one iteration of game loop has happened. So for example, what I'm trying to say is, uh, so this is the method one I'm talking about. And here, um, in this method, we do a parent-child relationship. We'll try both of the methods, don't worry. And so what we are doing essentially here is, let's say now we have a child class, sorry, child object, and there is also another child too. Okay.
child 1, child 2, 2, child 1, and this is the head. Now, if the head moves in direction, right? Head, I press a key, and now head's velocity has changed to go down. In that case, for one game loop, when I press that in the next game loop, my my tail shouldn't change the direction. My tail should only change the direction when one of the game loop has happened. So the next picture should look like this one, this child 2 here. This should be the child 1, and head should be here. This should be the head. So with one loop, one cycle delay, I can keep the parent-child relationship. And let's say now this one is changing. So for the next iteration, this should keep going straight, like 1, 2, and 3. This should be the case. And then the child 2 should change direction. So this is the method 1. Sorry, so this is the basic logic. And in method 1, what we are doing is we are not maintaining a bigger snake class. What we are just doing is once your head eats something, if there is no child, you create a child. If there is a child, you you pass the knowledge of eating an apple to that child, and it checks that whether it has a child or not. And let's say now that a child is created, what we do is for every head, that is when apple is eaten. But otherwise, if the direction is being changed, the logic should be that the head direction change should be transferred to its children. Um, direction change should be transferred to its children also. So that is method 1. In method 2, what we are doing is we are not maintaining uh, like a parent-child relationship, but what we are doing is we are maintaining a list, like a a stack, and what we are doing is just appending the the children to that list, and the attributes of the direction and location are maintained in the bigger class, the parent class, or let's say the full snake class. So that is method 1. Let me just I'll just rename this. I'll rename this as uh, method 2, and we will also create a snake 4.1, 0.2, and method 1. So this is the method 2. Here we are. Uh, what we're doing is maintaining the attribute knowledge of the body part inside the bigger bull snake body class. So here, if that is the case, the full snake should have basically the the move and the direction. I think move and direction change. Yeah, direction change will move. So direction change will be inside this now. And direction change will have self and stroke. That is fine.
But now the direction, the velocity of the head will change, right? Okay. So this won't be self dot velocity. This will be self dot head dot velocity, right? Am I right? Are you guys following, by the way? This would be self dot head. These are body parts, I think. Body parts, 0. So let's just first define head. And what we'll do is it should be head dot this should be head dot velocity and this should be head dot velocity as well. Now situation, with this situation, now if you look at this logic which we are trying to build in the method one, uh, sorry, in the method two. So this will be method two. Method two. Oh, we are having an echo. Tell me if it is fine. One sec. Mm, is it better now? If I remove the mic, actually I'm using my mic as my earphone. Hello, hello. Let me check one sec. Um, Two audios. Hello, hello, hello. Audios. Yeah, actually I have like two. One sec. Let me. Hello, hello. Yeah, actually I have like two. One sec. Let me. So help me here, Buggy Boy. The thing is that my audio itself is like a earphone, right? So if you look at this OBS here, it only shows one, right? This one, pulse audio, right? So if I change this, uh, device is fine. Mm-mm-mm. Audio mixer, yeah, here. No, that is this one is audio output capture. This is not the input one. Oh, this one. Oh, so sorry. So how do I stop this one? Uh,
Is it better? Hello? Hello, hello, hello. Yeah. This is good, better, right? Hello, hello. Yeah. This is good, better, right? Thanks a lot. Yeah. I'm gonna buy a mic, but for now it's yeah, thanks a lot, bro. Yeah. By the way, do I like know you or something or like you're just a random viewer? Oh, yeah, nice. Thanks a lot. Keep joining. I'm gonna stream on Carla next. So if you're interested in like self-driving cars or something, uh, you can jump in. So yeah, so currently just learning pygame, which is used in the Carla, right? So maybe you're gonna see what I'm gonna do. I'll just show you one second. Um, if you have time, that is. So PDMs. Uh, oh, one second. I have to switch OBS also. Yeah, now you can see, right? So Carla. Let's go with our language. Hindi. What is our language? Yeah, so this is Carla. This is what I'm gonna do next. So, and where was I? Yeah, so CD. So CD examples. गेम डेव नहीं हूँ मैं. एक्चुअली मैं एआई पे काम करता हूँ, लाइक जनरेटिव एआई और लाइक रोबोटिक्स में. पर ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न गेम डेव एंड पाइथन, क्योंकि लाइक आई यूज वाइब कोडिंग अ लॉट नाउअडेज. आई हैव रियलाइज्ड. तो इसमें जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ. आपको अगर लेट्स से रोबोटिक्स में भी इंटरेस्टेड है, आई एम गोना स्ट्रीम ऑन दैट आल्सो. आइसैक सिम वगैरह होता है ना, उस पे. एंड इस कार्ला का मेरा मेन गोल मोटिव है कि टू शो हाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर मेड. लाइक आई एम नॉट गोना बिल्ड लाइक अ प्रॉपर वाला सिस्टम विच विल compete with let's say टेस्ला, बट उसमें जो भी चीजें आती है वो धीरे धीरे वी कैन डू इट ऑन कार्ला. एंड वो मेरा गोल है, लाइक ओवर द ईयर टू कीप स्ट्रीमिंग ऑन दिस थिंग्स. आंध्रा से नहीं हूँ मैं, पुणे से हूँ, महाराष्ट्र. Oh, where are you from, by the way, if you can reveal? Buggy boy. स्लैंग, हाँ, मराठी लोग का थोड़ा ऐसा रहता है. ये देखा, ये देखो, दिस इज लाइक अनरियल इंजन 4 में है ये. एंड लाइक इस पे कुछ जो करना है कर सकते हैं. अच्छा, सीक्रेट है. नाइस नाइस. ये देखो, क्रेजी है ना. FPS 60 आ रहा है मेरे को. आई हैव लाइक अ 5070 Ti. तो क्रेजी ग्राफिक्स कार्ड, 16 GB रैम. So this is gonna be like the next stream. प्रो वो कुछ नहीं भाई.
I'm a mechanical engineer. I've been working only for like 2.5 years now. But yeah, तो ये सी चीजें हैं. But yeah, what do you do by the way? Do you code or like? कोडिंग वोडिंग करते हो क्या? कोडिंग वोडिंग? Linux best. You wanna see my system, Buggy Bhai? Oh, you just started. Good, bro. Let's learn together. ये देखो, this is my system. So, um, this is the graphics card. इसको नीचे से भी fans है. Um, ये 5070 Ti है. And this is the liquid cooling. Corsair या Deep Cool, I think, कंपनी का है. इसका वो ये radiator है, which also has like 3 fans. And देखो, and like, the entire box also has like 4 extra fans. So yeah, it's my system. LGBTQ lighting भी है. So yeah, let's get back to coding. Hmm, तो you're a junior dev, full stack. सही है, सही है. Kali में, Kali Linux. I've never used it. How is Kali? So do help in if you have some idea, because I'm not looking at any code to get this to work. So direction change uh, should be in the parent class. अरे कुछ नहीं यार, सब हो जाएगा. द ये पॉइंट है, एआई बबल फट गया ना. उसके बाद लाइक ओनली द क्रिएटिव पीपल विल सर्वाइव. तो इफ यू आर क्रिएटिव एंड यू नो स्टफ ना, सब चिल है. फुल स्टैक का क्या स्टैक यूज करते हो तुम? तो एड्स ऑफ डॉट पार्ट्स स्टीव yeah. Now exactly, bro, exactly. Everyone like that's the problem. Like people know stuff, but practically bugs का भी like what I personally do is मेरा पूरा सब को बड़ा कोड बेस है. आई यूज लाइक वाइट कोडिंग, इट वर्क्स. एंड लाइक मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में क्या हो गया, आई वाज वाइट कोडिंग फॉर लाइक एंटायर मंथ और 2 months. एंड व्हाट हैपेंड वाज सम पार्ट्स ऑफ द कोड एआई अज्यूम्ड वाज लाइक थोड़ा अलग थे. एंड सीन क्या हो गया कि लाइक आई कुडंट चेंज इट according to the requirement of the project because I didn't know what the code base was actually doing. अच्छा, आवाज रुक के आ रहा है. अभी ठीक है? हेलो. वायर्ड वाला यूज करना बेटर होता है. माइक राइट? माइक भाई मेरे को लेना ही है अभी. लाइक अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस एज माइक. दिस इज माय माइक. बट आई एम गोना गेट वन. तो या नेक्स्ट केस इज गुड. वायर्ड ईयरफोन्स नहीं है एक्चुअली. वर्किंग वाला भी नहीं है. बट आई गेट वन. अभी आई गेट अ प्रॉपर माइक ओनली अभी के लिए तो. बट इज इट बेरेबल? लाइक इज इट टू बैड?
Also, I have like a one sec. कहाँ गया? ये वाला एक बार ट्राई करता हूँ. Exactly. Hmm. I'm 25 bro. 25. इसका माइक एक बार देखता हूँ. One sec. तो इधर ये वाला why is it not working? अभी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा ना. One sec. अभी के लिए let me do this. Will be, you know, हेलो 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 हेलो. या अभी के लिए ये है. हाँ 2 साल बड़ा हूँ ब्रो. फेस डिस्प्ले. लेट मी ट्राई. वाई ट्राई बिट इज नॉट वर्किंग. इधर ट्राई बिट. आ गया चैट जीपीटी. I'm not able to see my Bluetooth. So
ये आ रहा है राइट। कोई ना। तो अभी आवाज आ रहा है क्या? कुछ तो यूट्यूब पे टैब तो बंद ही है। एक काम करता हूँ, लेट मी अभी के लिए ये मैं सेट, मेरा दूसरा माइक नहीं हो रहा है वर्क, तो अभी के लिए लेट मी अभी नहीं आएगा। हेलो हेलो हाँ। बिना माइक के? बिना माइक के आवाज आ रहा था? इसको मैंने अगर रिमूव किया, अभी आ रहा है आवाज? आई वाह, ये कौन सा माइक है? आई डोंट नो। या मे बी दिस इज माई पीसी's माइक। या एनीवेज, आप भी सुनाई दे रहे हैं ना? लेट मी यूज दिस वन ओनली देन, आई विल सेट इट अप प्रॉपरली नेक्स्ट टाइम। तो ओके या गुड, तो दैट इज गुड। अभी where were we? Yeah, so let's continue this. तो यहाँ पे this is working, snake one अभी क्या बन रहा है? तो ये अभी स्नेक गेम है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट बेसिक स्नेक गेम, और इसमें इफ यू लुक स्नेक 4 को, आई जस्ट शो यू। तो ये अभी ये फंक्शनैलिटी अभी बन चुका है राइट? हाँ एक मिनट, 4 नहीं 3 वाला दिखाता हूँ। सो
इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेड वाला दिख रहा है तुमको, दैट इज़ द स्नेक अभी के लिए. व्हाट इट्स डूइंग इज कि एवरी इटरेशन पे, इफ यू लुक एट द कोड, आई जस्ट शो यू वन सेकंड. यहाँ पे देखो, तो ये पहले तो पाइगेम वगैरह इंपोर्ट किया, कलर्स इंपोर्ट किया, डिस्प्ले बना दिया. दिस इज द स्क्रीन विच इज़ रिक्वायर्ड. स्क्रीन विड्थ हाइट, ये रेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पाइगेम में. दिस ऑब्जेक्ट बेसिकली हाँ कीज़ मैप किया यहाँ पे. तो कीज़ मैप करने के लिए क्या किया यार, तो पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट करके इवेंट्स ले लिए सारे, और इवेंट्स में क्विट किया की डाउन. तो की डाउन मतलब कभी भी जब प्रेस होता है तब वो कॉल हो रहा है इवेंट. एंड सारे मैप कर दिए यहाँ पे, और डायरेक्शन चेंज एक ये किया फंक्शन यहाँ पे. एंड वो वेलोसिटी बोल के एक ये किया था एट्रीब्यूट. तो वो वेलोसिटी बस उसका डायरेक्शन चेंज में नेगेटिव हो रहा है, नहीं तो एक्स में जा रहा है, एक्स और वाई में. हाँ पोजी भी मेजर कर रहा हूँ, तो लोकेशन है वो. और यहाँ पे देखो ये मूव जो है, मूव के लॉजिक में क्या है कि वेलोसिटी और लोकेशन लिया, एक्स और वाई अपडेट किया अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, और लोकेशन अपडेट कर दिया. और ये जो रेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज मैनेज्ड बाय पाइगेम. तो इस रेक्ट का जो सेंटर है वो सेल्फ डॉट लोकेशन कर दिया. सो वंस दिस इज डन अपन, और यहाँ पे ड्रॉ में क्या कर दिया, सेल्फ डॉट रेक्ट ड्रॉ कर दिया. तो ऑन द स्क्रीन यूजिंग दिस रेड कलर. और वो पहले का रहता क्यों नहीं है, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ पे इफ यू लुक आ गया यहाँ पे स्पॉन कहाँ गया फिल वाइट कहाँ गया, फिल वाइट यहाँ ये रहा, स्क्रीन डॉट फिल वाइट. तो वो वाइट आ जाएगा. फिर जब नेक्स्ट लूप में रेंडर हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे एप्पल और स्नेक वन, तो वो नए जगह पे ड्रॉ हो रहा है. इतना ही है लॉजिक, वेरी सिंपल. मेरा नाम विवेक है ब्रो. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जो बॉडी का मूवमेंट है स्नेक, इसके बड़े स्नेक के, वो मूवमेंट का कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. हाँ बुलाओ भाई, जो बुलाना है बुला. तो जो पूरा लाइक द फुल स्नेक है उसका भी लॉजिक करना है. कि इसमें क्या है कि उस लूप में जो स्नेक जा रहा है, उस लूप में पीछे के बॉडी शुडंट चेंज डायरेक्शन. अदरवाइज क्या होएगा कि ऐसी पूरी बॉडी जा रही है आगे और फिर एक इंस्टेंट में नीचे आ जाएगा, राइट. तो वो लॉजिक अभी लिख रहा हूँ. तो डायरेक्शन चेंज में सिर्फ मैंने हेड का डायरेक्शन चेंज किया अभी. हाँ रिफैक्टर तो करूँगा, बस अभी क्या है प्रोग्रेस रखने के लिए ऐसे नाम वगैरह दिए हैं, बट हाँ रिफैक्टर प्रॉपर करूँगा. ये तो मेरे प्रीवियस स्ट्रीम्स है, आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो. वो सब करना है. पहले तो ये हो ही नहीं रहा है, जो मेरे को इतना इजी लगता था बिना चैट जीपीटी और बिना कोड के. तो लेट्स सी. तो ये नाउ दैट वी हैव द डायरेक्शन चेंज, लेट्स कॉल दिस ऑन स्नेक वन. तो यहाँ पे I0 कर दिया. तो while running screen dot fill white I0 apple 1.
नया वाया कुछ नहीं, लॉजिक सिर्फ हेल्प कर दो, एक साथ ही करेंगे, विल लर्न टुगेदर। तो एप्पल वन डॉट स्पॉन लिखा है राइट, तो एप्पल वन कहाँ गया, उड़ा दिया क्या? एप्पल वन हियर, एप्पल पार्ट वन क्यों कर दिया मैंने? एप्पल वन, दिस इज फाइन, स्नेक वन, yeah, so we are spawning this, screen dot fill white, if I is 1 I plus equal to 1। तो ये तो फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट लूप में सब स्पॉन हो रहा है। ड्रॉ मूव एप्पल वन डॉट ड्रॉ, एंड अपने को ये भी लगेगा इवेंट क्लोज करने के लिए, एंड ये लगेगा, ये है 4.1। फुल स्नेक ऑब्जेक्ट को स्पॉन नहीं है बराबर, तो लेट्स नॉट स्पॉन दैट। नहीं, I live with my parents bro, yeah, so this is working, मम्मी पापा के साथ। एंड नाउ अपने को स्पॉन तो चाइल्ड के पास है, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज बॉडी पार्ट्स को स्पॉन करना है, तो इसके स्पॉन में यू हैव टू कॉल द स्पॉन ऑफ डेफ स्पॉन, इसमें सेल्फ दिया, हाँ ये रूम है, 2 BHK है भाई। तो इसके स्पॉन में अपने को उसके चाइल्ड स्पॉन करना है राइट, तो फॉर चाइल्ड इन सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स, अपने को उनके चाइल्ड डॉट स्पॉन करना है राइट। 2 रूम, हाँ एक मेरा एक पापा का, 2 BHK। तो ओके let's get this back, snake one dot spawn, तो करंट स्नेक क्यों किया था? Let's try this. इनपुट ले रहे क्या किधर? दिस लुक्स गुड। अभी स्पॉन किया, लेट्स ड्रॉ ऑल्सो। ड्रॉ नहीं है तो we need a draw command also, और इसके ड्रॉ में we have to call the draw of the children, तो ऐसे ही है बस child dot draw।
स्नेक एप्पल्स का फंक्शन, स्नेक का एक एंड पोजीशन का एक। उससे क्या होगा? स्नेक का एक और पोजीशन का एक, तो ये तो पोजीशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्नेक, फुल स्नेक पे तो नहीं रहेगा, राइट? फुल स्नेक वोंट हैव द पोजीशन इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग. It will only have the position information of its head, right? And all the other things are stored inside the children itself. तो ये वाला देखते हैं वर्क हो रहा है क्या, फिर विल ट्राई. इफ दिस इज नॉट वर्किंग विल चेंज समथिंग. तो ये क्या हो गया? हाँ, तो दिस इज गुड. तो अभी क्या हो गया, दोनों बॉडी पार्ट्स आर प्रिंटेड नाउ, राइट? दिस इज वर्किंग. अभी वी वांट टू मेक देम मूव, राइट? ठीक है. So we need a function to check if okay, let's do this. पहले तो वो they should be joined, right? तो joint होने के लिए whenever we spawn, let's spawn हो गया. Now we have to ensure that उनका location, once key is pressed, check the direction and remove the snake from canvas and redraw again on new position. ये वाला तो किया है अपन ने, ये वाला दिखाओ क्या? स्नेक 2 में था आई थिंक, बट ये कर सकते हैं अपन. ये क्रिएट करना है क्या? यू कैन डू दैट. चलो ये वो ट्राई करते हैं, तुम जो बोल रहे हो. तो स्नेक 4.3 बटन प्रेस स्पॉन डॉट पाई, यही बोल रहे थे ना? तो क्या क्या लगेगा? स्नेक 4.1 से लेते हैं, क्या क्या लगेगा, फिर एक एक करके उठाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट लेट्स import things. Folder in the sense कैसा? तो इधर टेस्टिंग आइडियाज इसमें डाल दिया, ठीक है? अभी स्नेक मूवमेंट, चलो ठीक है. तो लेट्स क्रिएट दिस. डायरेक्ट हो गया. तो व्हाट यू सेड वाज कैमरा छोटा करना है ना? ठीक है.
ये हो गया, एप्पल भी ले लेंगे, एप्पल नहीं चाहिए एक्चुअली, राइट। तो एप्पल ले उड़ा देंगे, वाइल रनिंग ये सब नहीं चाहिए, आई इक्वल्स टू 0 ये भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे कोई ना विल डू इट। तो कोलिजन फॉल्स, कोलिजन चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इवेंट इन जी, यहाँ पे अपने को इवेंट क्या बोले तुम, grow snake and remove the apple from that position and respawn again, redraw the snake। तो the suggestion तो आप बता रहे हो कि let's say let me go here, so what you are saying suggesting is कि एप्पल तो उड़ जाएगा, ठीक है, एक बार कोलिजन हो गया, एप्पल इज रिस्पॉन्ड, दैट इज फाइन। तो हेलो, हाय न्यू ईयर, फैंटम जम्प्स, वेलकम। वो अभी तो वही कर रहे हैं, बट लाइक कैन यू लाइक डिस्क्राइब द लॉजिक मोर। सो लेट्स से कोलिजन हो गया, यहाँ पे एप्पल था, यहाँ पे आ गया, 1 पे था, 2 पे आ गया, दैट इज फाइन। पर अभी स्नेक है, राइट, तो स्नेक का चाइल्ड एक बढ़ाना है, राइट। सो लेट्स से स्नेक वाज लेंथ 1, so you have to create like a child object at the location opposite to the direction of velocity, right। मतलब ऐसा जा रहा है राइट से राइट में snake, and if we let's say create a body here, it won't be right। So body should be created on this side only, making sense। तो यहाँ पे I was trying to do that only। तो currently let's say if I do one sec, तुम बोल रहे हो सही है, 1 मिनट। सो लेट मी गो स्नेक 4.1, या सो हियर अभी प्रॉब्लम क्या है कि गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से 2 इनपुट्स टू दैट फुल स्नेक, वो दोनों रॉन्ग जगह पे आ रहे हैं, राइट। तो पहले तो उसको अपने वो ये करना है, टुन टुन, हाँ वो like when I press clear, I don't know why, but हाँ, तो
the idea here is snake. तो इसमें one way is to maintain it. Let's say here in the draw spawn for child in so for k1 k2 in zip self zip of body parts print k1 पहले ये देखते चल रहा है क्या snake 4.1 okay so snake 1 let's create another one part 3 just let me create 3 पे करेंगे तो क्या बोल रहा है वो zip current snake 1 dot spawn zip dot body parts okay so I want to do not zip क्या बोल रही बाय द वे फिर जहाँ एप्पल कहाँ उसके एक यूनिट आगे आना चाहिए अच्छा सो यू आर सेइंग कि जहाँ पे एप्पल है उधर पे ही हेड डाल देने का एंड बॉडी पीछे reset pose yeah that I'll do this is the problem so what I'm trying to do here is we have a list k1 k2 तो मेरे को सारे बॉडी पार्ट्स इन ऐसे चाहिए कपल्स सो k1 k2 इन zip expected to got 1 self body parts comma parts and I want all but the last तो all -1 और यहाँ से नो यहाँ से चाहिए रुको 1 से स्टार्ट करेंगे एंड ऑल या तो full snake print k1 k2 k1 dot name and k2 dot name तो head neck chest
विच इज़ गुड, सही है। अभी अपने को क्या करना है कि हाँ, तो अभी अभी क्या किया समझ जाना, हेड नेक नेक चेस्ट ऐसे ये बना दिए, ठीक है। एंड हेड नेक नेक चेस्ट, ठीक है। और अपने को क्या करना है कि K2 K2 का जो लोकेशन है K2 dot location equals to, so let me do this, K1 dot x comma y equals to K1 dot location और K2 का लोकेशन, एक मिनट, और xv comma yv equals to K1 dot velocity, ये हेड की वेलोसिटी और लोकेशन हो गया। और अभी K2 का जो लोकेशन है दैट शुड बी, if let's say velocity का डायरेक्शन, आर वी मेजरिंग दैट, या तो अगर सेल्फ डॉट वेलोसिटी का ज़ीरो, हाँ लोकेशन मिल गया। तो अभी इफ लेट्स से वेलोसिटी इज गोइंग अपवर्ड्स, सो द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज पहले से सेट कर रहा हूँ, लाइक दिस इज नॉट द फाइनल लॉजिक बट आई एम ट्राइंग टू गेट द लोकेशंस राइट। तो इफ yv equals to 0, this means that the snake is going left right, then equal to 0, sorry, then what we want to do is उसका जो xv का डायरेक्शन है, so and if xv is smaller than 0, मतलब xv is negative, it's going to the left, then अपने को K2 का जो लोकेशन है equals to K1 का x y तो वही रहेगा, तो y should be y of K1, sorry y, but the x should be x of K1 plus the minimum distance. Let's say minimum distance is the size 25, 26 रखते हैं, ये तो 30 रख देते हैं। मिनिमम डिस्ट K2 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहाँ पे, एंड दिस लॉजिक लेट्स यहाँ पे लिख आएगा एल्स एलिफ एक्स पी ग्रेटर देन 0 है तो दिस विल बी माइनस, and LF YV XV 0
तो अपने को K2 का लोकेशन तो x आ जाएगा और y में क्या आएगा? अरे ऊपर वाले वो कुछ तो दे मेक लाइक सम काइंड ऑफ मसाला, तो वो डमरू बजाते रहते हैं। तो इफ एक्स वी ज़ीरो एंड वाई वी इज स्मॉलर देन ज़ीरो, मतलब वाई वी इज गोइंग अप नेगेटिव, तो x2 के लोकेशन में x प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस मिनिमम डिस्टेंस, and similarly इधर आएगा LF माइनस। और यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, इधर बोल रहे थे ना, ये नहीं आएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। अभी क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ड्रॉ अपना लूप में हो रहा नहीं है क्या? अपना मूव ही नहीं हो रहा है, राइट? मूवमेंट के लिए लेट्स रिमूव दिस। एक्चुअली मैं सिंगल स्नेक, मतलब 3 स्नेक नहीं है वो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये बॉडी पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू समहाउ, तो मेथड, ये मेथड 2 है, राइट? तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, मतलब हेड, चेस्ट, नेक, ये सब का रिलेशनशिप आई एम ट्राइंग टू मेंटेन इट इन द बिगर क्लास। मतलब सेकेंड वे इज इन द मेथड 1 व्हाट वी कैन डू इज, ये बड़ा स्नेक क्लास रखने का ही नहीं, एवरीथिंग विल बी इनसाइड द ये वाला ही जो दूसरा क्लास है स्नेक का, जो पहले था, दिस वन स्नेक पार्ट क्लास, और पार्ट के में ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखने का। बट दैट इज़ अ बिट टफर, आई थिंक दैट विल डू लेटर। बट पहले तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि अभी ये मूव होएगा, देख, लेट्स से या इट डजंट हैव अ एट्रीब्यूट मूव, राइट? तो यहाँ पे अरे 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 अरे, आपकी है क्या कोई गर्लफ्रेंड? लड़की का चक्कर बाबू भैया। तो मूव में वही करना है, वी वांट टू कॉल इट ऑन अ लूप चाइल्ड डॉट मूव। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, डांस 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 विद मी बेबी। इसी बहाने थोड़ा पानी हो जाए। 3 साल पहले था, बाय बाय, फिर क्या हो गया? मूव नहीं हो रहा पर अभी। दिल तोड़ दिया क्या? अरे अरे
सपना टूटा है पर दिल अभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ऐसा है, दिस इज रनिंग बढ़िया। Dance with me, baby. अभी ये आइडिया समझा ना तुमको क्या क्या है मूव में बस ये लॉजिक, दिस लॉजिक इज फॉर नॉट लेटिंग द स्नेक, वो जो लूप हो रहा था ना, ये वाला नहीं। तो वंस इट टचेस दिस पार्ट इट इज स्पॉनिंग हियर राइट, तो उसका लॉजिक ये है। तो 25 इज बेसिकली the 50 is the size of the rectangle। तो यहाँ पे देखो ये 50,50 है, इसलिए इधर क्या किया है, what we have done is if rect dot right is greater than screen width, speed ना, स्पीड कहाँ गया, स्पीड टाइम डॉट स्लीप में था क्या, मूव वेलोसिटी -10 लेंथ 1 ये कर सकते हैं अभी के लिए। Basically the pygame refreshes at a very high rate, so we have to put a time dot sleep here to keep it going at a certain speed। कंट्रोल राइट, तो लेट्स से इफ ये वाला पहले लिख के आते हैं, इवेंट डॉट की डाउन। तो स्कैन कोड बेसिकली मैंने क्या किया, आई फाउंड आउट कि स्कैन कोड ये वाले जब रहेंगे तब इट इज़ इधर राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। तो फुल स्नेक के डायरेक्शन चेंज में अभी सिर्फ लेट्स से पार्ट 0 विच इज हेड, उसका वेलोसिटी अपन चेंज कर रहे हैं, बट चिल्ड्रन का नहीं कर रहे अपन। पाइथन मास्टर, अरे पाइथन आ रहा नहीं है और जॉब मेरा गया अभी, जॉब इन द सेंस इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। तो आई वोंट बी एबल टू गिव एनी इंटरव्यू प्रो, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं बचा। ऊप्स समझो एक बार ना, हाँ तो ये बेसिक अभी ट्राई कर रहा हूँ, वही द गोल इज दैट ओनली टू अंडरस्टैंड लाइक ऊप्स प्रॉपर एकदम खतरनाक। तो ये वाला चल रहा है क्या कोड अभी? तुम एआई में इंटरेस्टेड हो क्या बाय द वे बगी बॉय? ऊप समझाओ। अरे मुझे भी नहीं आता इतना, बट बेसिकली क्या है, ये पेरेंट क्लास है राइट, ये क्लास होता है एंड क्लास में ये उसके एट्रीब्यूट्स है, ये इनिट फंक्शन है। इनिट फंक्शन में क्या होता है कि व्हेनेवर यू कॉल समथिंग
ठीक है, यहाँ पे लेट से सिंपल मैं तुमको बताता हूँ एकदम। तो एकदम सिंपल में क्या है कि लेट से आई मेक अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें तो स्टूडेंट ने जान दो, एक काम करते हैं आर्चर ऐसा बनाया मैंने क्लास, ठीक है। तो आर्चर के मतलब गेम जब खेल रहे हो तब एक क्या कर सकते हो, लेट से यू वांट एन आर्चर टू शूट। आर्चर जो शूट होगा, अरे अरे तुमको सैलरी तो मिल रहा है भाई, मेरा सैलरी भी बंद है अभी तो, बट बेसिकली वो इफ़ यू हैव स्किल पीपल पे ब्रो। तो क्लास आर्चर बना दिया और फिर डेफ इनिट बना दिया एक, ठीक है, और इसमें सेल्फ पास करते हैं, ठीक है, और सेल्फ डॉट तो दिस इज लाइक इतना रहेगा तो भी दिस इज डन, मतलब दिस इज ऑल्सो आई कैन जस्ट पास हियर एंड नाउ आई कैन डू आर्चर 1 इक्वल्स टू आर्चर, ठीक है। तो बट अभी दिस आर्चर वोंट डू एनीथिंग राइट, मैं अगर इतना ही प्रिंट करूँ स्नेक मूवमेंट्स और स्नेक 4 है ना, तो नथिंग इज हैपनिंग राइट। सीओसी क्या होता है भाई? तो ये अभी आर्चर को लेट से कुछ एट्रीब्यूट्स देने का है, मतलब हेल्थ, लेट से हेल्थ, तो इधर वो पास कर सकते हैं अपन बेसिकली। तो हेल्थ पास किया इधर इक्वल्स टू हेल्थ, जो ये पास किया है ये हेल्थ है। तो अभी मैं आई कैन जस्ट पास हियर स्टार्ट में इनिट करते समय ऑब्जेक्ट कॉल करते समय ये फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे आर्चर को मैं हेल्थ दे सकता हूँ लेट्स से 10 एंड यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ कि आर्चर, तो अभी ऑब्जेक्ट का हेल्थ प्रिंट कर सकते हैं अपन, समझे। तो आर्चर ऑब्जेक्ट नॉट एट्रीब्यूट हेल्थ आई आर्चर सेल्फ हेल्थ, ये क्या हो गया? आर्चर 1 आर्चर 1 वेरिएबल, अच्छा इधर पास कर रहे हैं अपन 1 डॉट हेल्थ। एआई मास्टर नहीं हो भाई, बट मेरे को अच्छा क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है भाई उस, बट वी कैन क्रिएट लाइक अ टावर बेस्ड गेम, मतलब जैसा क्लैश रॉयल पता है ना,
तो मेरा एक आइडिया था कि अपना जो ये होता है क्लैश रॉयल, राइट? तो हाँ, बना तो सकते, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह बना सकते हैं, बट मेरा मेन प्रोजेक्ट एक है दूसरा, विच इज़ टू क्रिएट एन AI विच वुड प्ले क्लैश रॉयल और क्लैश ऑफ क्लैंस, समझ रहे हो? वो इंटरेस्टिंग है ज़्यादा, और वो मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम्स में। गेम भी बनाएंगे पाई गेम में, बट क्लैश रॉयल खेल पाने वाला बॉर्ड बना है तो क्या क्रेजी हो जाएगा, सोचो ना। एक वीक के बाद एक बार ये खत्म हो गया ना, और वो कार्ला का मुझे 2 स्ट्रीम्स करना है, उसके बाद विल गो टू दैट वन, क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश रॉयल, ऐसे सारे गेम्स खेलने वाला बॉर्ड बनाएंगे अपन, सेल्फ प्ले, खुद खेलेगा वो, और बेटर स्ट्रैटेजी ढूंढ के निकालेगा। हाँ, तो सेल्फ डॉट हेल्थ जब यहाँ करोगे तब यहाँ पे आर्चर 1 डॉट हेल्थ आ जाएगा, ठीक है? तो ऊप्स में इतना ही है कि यू कैन प्ले विद द एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यू कैन गेट डायरेक्टली। और लेट्स से मैंने शूट बोला, एक फंक्शन डेफ शूट, और यहाँ पे हेल्थ के जगह मैंने एरोज भी लिए, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं कि बेसिकली सेल्फ डॉट एरोज इक्वल्स टू एरोज, और शूट फंक्शन में what I can do is I can let's say shoot an arrow, right? तो यहाँ पे सेल्फ ले लिया, और यहाँ सेल्फ डॉट एरोज प्लस माइनस इक्वल्स टू 1 कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने 10,5 लिया, और यहाँ प्रिंट एरोज किया। ये देखो, तो अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ स्ट्रिंग रहता है ये, कि द एरोज, द नंबर ऑफ एरोज, नंबर, द हेल्थ दिस आर्चर हैज इज, और इसमें डाल दिया एफ स्ट्रिंग में, ठीक है? और इधर वही किया, एरोज लेफ्ट, ठीक है? तो यहाँ पे दिख गया एरोज, पर मैं अगर लेट से यहाँ पे शूट करूँ, मतलब आर्चर 1 डॉट शूट, ठीक है? एंड देन इफ आई डू अगेन यहाँ पे, तो इफ यू विल सी कि यहाँ पे प्रिंट किया, लेट्स से शूट में प्रिंट आर्चर इज शूटिंग, ठीक है? तो यू विल सी कि नंबर ऑफ एरोज वाज 5, देन आर्चर तो आर्चर इज शूटिंग एंड द नंबर ऑफ एरोज इज 4। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए ऊप्स यूज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आवर्स पर 1-2 घंटा ब्रो, जब तक मूड है तब तक। डिस्कॉर्ड बॉट बना रहे हो, मॉडरेशन, न्यूज़ हैंडलिंग, म्यूजिक प्ले, वेरी गुड भाई, बट डोंट यूज चैट जीपीटी ब्रो। चैट जीपीटी तुमको 1 शॉट में बना के देगा आजकल, अपना जेमिनी वगैरह तो क्रेजी है। बिना इसके कर रहे हो ना, बिना एआई के?
तो एनीवेज लेट्स गेट बैक टू ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का समझा ना. यू कैन क्रिएट गेम्स यूजिंग दिस. यू कैन बेसिकली ये वही है, स्टेट मेंटेन करता है. एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग में देयर इज स्टेट इज नॉट मेंटेन्ड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये स्टेट मेंटेन करता है, कितना हेल्थ है, कितना एरोज है. तो एनीवेज लेट्स गेट बैक. तो स्नेक गेम में ये डायरेक्शन करना है ना अपने को. तो इफ दिस हैपेंस आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन. स्नेक मिनिमम डिस्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट नहीं है. ओके मिनिमम डिस्ट. सेल्फ डॉट मिनिमम डिस्ट, हाँ इधर नहीं है. सो आज से एक दिन में बन जाएगा. थोड़ा थोड़ा जब डाउट होता है तब यूज़ कर रहा हूँ. हाँ इट्स गुड. मेरे को भी दिखा दो होने के बाद क्रेजी कुछ. गिटअप पे डाल दो. और यस ब्रो श्योर. ओ भाई ये देखो. तो द इशू हियर इज कि ये जो लॉजिक अपन ने बनाया था
मुंडी अलग। एक सेकेंड वापस देखते क्या हो रहा है। तो मुंडी अलग वेलोसिटी, हेड डॉट वेलोसिटी, सॉरी। दिस इज वर्किंग। बाइंड करना है ना, तो जो अपना स्पॉन फंक्शन का ये जो लॉजिक है, ये अपने को मूव फंक्शन में भी डालना है। तो स्पॉन में ये कैसे करने का कोई सजेशन है क्या ब्रो? Any suggestion, guys? So the problem right now is how to bind the body with the head. One thing we can do is pura snake. We cannot make the full snake a rectangle, because I'll tell you what the problem will happen. Snake जब सीधा जा रहा है, लेट्स से उसको लेफ्ट में अपने को टर्न करना है, तो इफ यू क्रिएट द एंटायर स्नेक एज रेक्टेंगल, इट विल बिकम लाइक दिस, पूरा चेंज हो जाएगा। बट अपने को वैसे नहीं चाहिए ना, स्नेक शुड मूव लाइक दिस, हेड इधर चला गया, उसका बॉडी उधर ही जाते रहना चाहिए, एंड देन बॉडी यहाँ पे आ रहा है। ऑल्सो तुम पूरा रेक्टेंगल अगर बना दोगे ऐसा, तो वेयर विल यू कीप इट? विल यू कीप इट हियर, हियर, हियर? वेयर विल यू कीप इट? यहाँ पे डाल दिया तो किधर? समझा? इट्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक इन दैट वे। One thing we can do is in direction change. Now we are doing it only for the head, right? What we can do is we can change the velocity मूवमेंट सही जा रहा है अपना, बट अपने को वेलोसिटी हेड का चेंज कर रहे हैं ना अभी अपन, बस यहाँ पे। तो अपने को सबका करना है बेसिकली। तो ये फॉर लूप में चला जाएगा। फॉर लेट्स से इसको अपन
तो फॉर चाइल्ड इन सेल्फ डॉट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एवरी चाइल्ड के लिए डिस्कॉर्ड पे, हाँ डिस्कॉर्ड चैनल भी एक कमांड्स नहीं है, कैसे करना होता है ये? आई चेक इट आउट। यू वांट माय डिस्कॉर्ड लिंक क्या? आई शेयर, नहीं तो मैं प्रॉपर एक चैनल बना के आई शेयर इट विथ यू। अभी थोड़ा सीन है डिस्कॉर्ड का। नाइट बॉट चलेगा। डिस्कॉर्ड पे रात को बैठता ही हूँ मैं, बट अभी थोड़ा आई हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। दैट अकाउंट इज यूज्ड फॉर सम मिस्चीवियस स्टफ ब्रो। तो चलेगा चलेगा, आई डेफिनेटली डू इट। तो यहाँ पे चाइल्ड के लिए अपने को ये सब करना है बेसिकली, एंड यहाँ पे let's do this and let's replace उधर चाइल्ड आएगा, child 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 but child is आई कॉमा चाइल्ड करते हैं, आई कॉमा चाइल्ड। सो आई कॉमा चाइल्ड इन सेवरल बॉडी पार्ट्स, चाइल्ड इज सेवरल बॉडी पार्ट्स, इफ स्ट्रोक इज 82, चाइल्ड डॉट वेलोसिटी, नाइट बर्ड बोल रहे थे तुम लोग। ओ दिस वन, ये करता हूँ मैं, सेट करता हूँ, माइक का भी देखता हूँ। तो क्या बोल रहे तुम? बॉडी पार्ट ऑफ आई आएगा, 0 में हेड आएगा। एक्चुअली बॉडी पार्ट ऑफ कुछ भी नहीं चाहिए अपने को अभी, क्योंकि अपन चाइल्ड यूज कर रहे डायरेक्ट। आई कॉमा चाइल्ड इन एन्यूमरेट करना है इसको। सो अभी the thing is कि if stroke is 82, child at velocity, I think this mic is of my monitor if I'm not wrong. My monitor is crazy. You know, see my monitor or what? Okay. तो let's get back. तो इधर चाइल्ड द प्रॉब्लम समझ रहा है आपको कि मैंने वेलोसिटी अगर सबकी चेंज कर दी
तो वो स्नेक ऐसे ऐसे मूव होगा. लेट्स सी, आई जस्ट शो यू. ये देखो. No. तो is that we have to put a delay. तो तो we can create a memory, right? तो let's say we create a memory इधर, location, velocity and a memory. Memory which is equals to 0 for now. और मैंने self dot इक्वल्स टू मेमोरी कर दिया. ठीक है. तो अभी क्या कर रहे हैं अपन की, उसको एक मेमोरी दे रहे कि द हेड हैज मूव्ड, यू हैव टू मूव in let's say in the length of the children or let's say the parts ahead you. तो इसको मेमोरी दे दिया, मेमोरी 0 कर दिया. एंड इसके मूव में if memory equals to हाँ, तो if memory equals to self dot memory आएगा, equals to 0, then nothing is like just we just have to do all this. या उल्टा करते हैं, एक मिनट रुको. Let's just keep this as it is. If self dot memory is greater than 0, if this is 1 or something, then what we do is पहले तो अपन मेमोरी को कम करेंगे, माइनस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स 1. और अपने को करना है क्या है कि उसका and just pass, just don't move, just print here we didn't move because we haven't reached there yet. क्या बोले, टाइम डॉट स्लीप. टाइम डॉट स्लीप नहीं करना है एक्चुअली अपने को, उस बेसिकली उस इटरेशन पे, ऑन दैट इटरेशन ऑफ द स्टेप, मतलब सिमुलेशन का एक स्टेप हो रहा है, उस स्टेप पे व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक इट नॉट डू एनीथिंग. मतलब वो बॉडी पार्ट, हेड तो मूव हो गया, बॉडी पार्ट को कुछ नहीं करना है एक स्टेप के लिए, जो नेक्स्ट वाला बॉडी पार्ट है. मतलब इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट शो इट टू यू. तो बेसिकली ये दोनों मूव हो रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो सेकेंड वाले इसमें क्या करना है कि दिस शुड कीप मूविंग फॉर 1 स्टेप, ऐसा, राइट. ये नीचे आ जाना चाहिए. एंड देन उसके बाद से यू कीप ऑन मूविंग विथ वॉट एवर द डायरेक्शन हैज चेंज्ड. यहाँ पे जो दिखाया था मैंने ट्रिपल कोड, हाँ वो कर सकते हैं. आई थिंक वो ये भी कर सकते हैं, बैक स्लैश कुछ तो डालते हैं, आई थिंक बैक स्लैश डालते हैं. या
ऐसे भी कर सकते हैं। सो सो दिस आई थिंक, तो मेमोरी अपन ने ये कर दिया, राइट, मेमोरी कम कर दिया, यहाँ पे पास होगा, वी डोंट डू एनीथिंग। एंड इफ else this, all of this, एंड अपने को यहाँ पे अभी क्या करना है, बस उसकी मेमोरी जो है, ओनली द मेमोरी इन इसका मूव, नहीं डायरेक्शन चेंज, तो इसकी मेमोरी फॉर एवरी चाइल्ड शुड बी इट्स ith वैल्यू, राइट, फॉर i 0, सो हेड के लिए मेमोरी 0 है, बट i is 1, मेमोरी is 1, राइट। तो अपन ने अगर लेट्स से इधर i को चाइल्ड डॉट मेमोरी i ये कर दिया, तो आई थिंक इट शुड वर्क, बट लेट्स सी। अयो अरे अरे क्या हो गया? Ayyo Rama, what is this, brothers? What is this? ये क्या हो गया भाई? But some progress, हाँ, some progress. Little promising, little bit. क्या गलत हो गया? कैन यू थिंक एंड टेल मी? मे बी what's the time? तो एक काम करते हैं, चाइल्ड मेमोरी आए हैं, राइट, दिस शुड बी आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग? Should it be I plus 1?
one thing we can do is we can print, let's say input तो ये क्या हो गया? तो बेसिकली हेड भी रुक रहा है. व्हाई इज द हेड स्टॉपिंग? इसको आई ही रखा. ये कैसे करना है? बाय द वे, बगी बॉय, इफ यू आर देयर, डू सब्सक्राइब, राइट? क्योंकि आई एम गोना क्लोज द स्ट्रीम सून. आई हैव टू गो टू जिम नाउ, बट वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव टू debug this. We'll start debugging it tomorrow. I'm not able to find an answer. If you can suggest something, do suggest. So current progress as I'll show you. So we got like a body created, and it is also changing direction, it is moving also. So if you look at this, let me just show you guys before closing it for today. Where's that input? So this is the current progress. तो ये प्रोग्रेस है अपनी. कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो व्हाट. सो
yeah, definitely we'll start tomorrow to get this solved. Let's see if we can figure out. If you have some solution in mind, definitely let me know, and I'll upload all the current code in a Git repo. Uh, you can also pull it from there and check it once we get this done. So thank you for watching the stream, guys. Bye bye, and yeah, see you tomorrow. Bye bye.